Hello, good evening, everyone, and warm welcome. This is Manas Chakrabarti speaking. We'll introduce to each of one of us very soon. But I just wanted to mention few short words. That there is a Japanese word called kaizen, and it's a very famous word and very close to my heart. It says small positive changes throughout the life. And it is often said that if we do 1% better every day, at the end of the year, we will probably 38 or 39 times, I don't remember the exact number, but that many times better. Whatever mathematics says, but it is all about blood and flesh life. Before we start the program, I just wanted to mention that it is a program that will grow on your senses. The first time you will hear, you will see the program, listen to it. And I'm sure that in many times in our lifetime, that we will have to come back to this program to revise it again and again. But it is completely out of syllabus. I always liked out of syllabus things in my life. Even in classes of my school, I read Ray, Ashapurna Devi, and various other things which are not in the syllabus. But it helped me enrich and me and people around me. So that is something very crucial. So it is all about out of syllabus skills, and that is not taught readily in the school and colleges, that you have learned from our own life, and we'll hear about that. I just wanted to share a small story. In Manchester, when I was there in our flat, there was a lush green garden, and there was a patch of area within this lush green garden that there was no grass. But the problem was simpler. So we bought some seeds, watered it, wait for the right season, and eventually it was all green. But few years afterwards, when I came back to Kolkata, in our new house, we had again a small garden. But here, everything was barren. There was rubbishes, small bricks and mortars and pieces of woods and stuff. There was no greenery anywhere. So what did I do? We started to doubt our abilities, whether we will be able to grow grasses or not. But eventually we took help from our neighbors, and we took some guidance from the gardeners. And eventually, after 3 long years, we had some good green and we had some flowers. But that is something beyond that. When we have got every weekend, we started to doubt ourselves. Will we have grass on the field? Will we have flower? Every weekend we doubted ourselves, but eventually we kept our promise. And what the moral of the story is, our brain copes up with the problem if the problem is small and we can see the success at the end of it. But life becomes very difficult when we do not see the success readily. And of course, life becomes uncertain. Our brain is not designed to cope with such things. We have to have these immense life skills to train our mind to cope up in the deepest, darkest days of our life, when we all need to bounce back and say to life that, life, I'm here to embrace you again, in spite of being hit very hard, very intensely. Such stories are easier to tell, but today we are going to hear these type of stories from people who are of blood and flesh. Let's see what did they do. Today we have got, I'm going to introduce only Arvind, who has got a prefix, very famous prefix. I think Kolkata wakes up with his name, RJ Arvind, and he's with Radio 1 and everything. But apart from his professional background, he is a fantastic human being, very good friend of mine. We met a very difficult circumstances, but anyway. And today, let's start the program. But before we start the program, I mention one thing. This program is completely unscripted and unsponsored, and there is no promotional activity here. Over to you, Arvind. Manas, thank you so much. I'll go a little bit in Hindi today because हमारे जो गेस्ट हैं वो आपसे हिंदी में ही बात करेंगे. जिंदगी भी कुछ अनस्क्रिप्टेड ही है. हमें नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट या नेक्स्ट पल में हमारे साथ क्या होने वाला है. The unpredictability is something that we all enjoy in life. Very quickly, let me introduce my guest.
you give 3 hours to movies, right? আপনারা যখন বাড়িতে বসে থাকেন, you watch a Netflix or you watch an Amazon, you sit and party with your friends. As Manas says, we can do all that we want to do, but we request 30 minutes from you, because in this 30 minutes I want to reach out to you and we want to tell you that you're not alone. And that is the only reason. There will be no medical jargons, there will be no technical terms that we talk about. Even though we have a doctor in the panel, we are human beings at the end of it all. Beyond medical science, the approach to our life जो हमारी जिंदगी को थोड़ा सा बदल दे, बस यही हमारी कोशिश है. इससे पहले कि मैं आज के हमारे गेस्ट को इंट्रोड्यूस करूं, एक ऑथर, एक पॉडकास्टर और एक सोशल एंटरप्रेन्योर. कहना बहुत आसान है, स्टे काम, सब सही हो जाएगा. लेकिन जब छत गिरता है, when the lightning falls on your head, it becomes very, very difficult. Then these WhatsApp forwards or Google के quotes or inspirational movies, they don't come to your rescue. Your headspace comes to your rescue. किस तरह आप उस सिचुएशन को देखते हैं? Just to take from Manas' story, Manchester का भी grass और Calcutta भी grass, you need to ask for help. You need to find the right conditioning for that grass to grow. It's the same way that our mind also works. My next guest today is someone who's going to be leaving in 5 minutes, sadly, because some other week we will probably have a 30-minute session from him. Fantastic musician, even better human being. Okay, বন্ধু বলে ডাকাটা একটু ভুল হবে. Okay, ভাই বলে ডাকাটা বেশি ভালো. So I introduce him as a brother, Anupam Mallik. प्यार से हम उसको मिथुन भाई बुलाते हैं. And he's in Mumbai right now. Mithun wanted to start with a little music for each one of you. আর আজকের এই সেশনটা থিমটা হচ্ছে বাউন্স ব্যাক, ফাইট ব্যাক. মানে কিশোরদার গান যেটা মনে পড়ে যায়, রুক জানা নেহি তু কাই হার কে. Now I'm not a good singer. I only play songs on my radio show. And please keep commenting. Sumita, so good to see you. Good evening to all of you. Very important topic is starting now. We wanted to keep it light. We wanted to keep it fun. Mental health niye jodi kotha bolte hoy doesn't mean that one has to be serious. We can have it with a little sense of humor and lots of music. So over to you, Mithun. Mane for a musical start. Hi everyone. Thanks Arvind. Thanks Vivek ji, and thanks Dada for inviting me in this show. So I was just heard about you that you are doing a fantastic work here for the people, for the humanity. So end of the day, the last word is humanity always. There is no word after humanity or before humanity, at least to me. So आजकल जो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, that is finding ourselves, so that to me we should not get lost. So बंगाली में हम लोग बोलते हैं जीवन खुदे पावा. So I'm just presenting some few lines which is composed by me. It was a very famous song from Kolkata. Indranil Sen, he was a very famous singer. He recorded this song and it was very popular in FM radio also for a long time. So I am just few lines. So lines are very important. So please listen the lines. So I'm trying. My mind, মন মনে মনে কত না রঙে আমি শুধু তার ছবি এঁকে যাই, গানে গানে সারাটা দুপুর জুড়ে শুধু তার কাহিনী শোনাই, আর এমনি করেই আমার মন জীবন খুঁজে পায়. My mind is finding the light. আর এমনি করেই আমার মন জীবন খুঁজে পায়, আশায় আশায় ভালোবাসায়. Lots of hope, lots of love. So our life, our mind can get the life back. So this is the song. মনে মনে কত না রঙে আমি শুধু তার ছবি এঁকে যাই, গানে গানে সারাটা দুপুর জুড়ে শুধু তার কাহিনী শোনাই, আর এমনি করেই আমার মন জীবন খুঁজে পায়, আর এমনি করেই আমার মন জীবন খুঁজে পায়,
আশায় আশায় ভালোবাসায় আশায় আশায় ভালোবাসায়. Thank you very much. I hope the meaning is very clear to all of you. There are lots of colors, there are lots of painting. So we should keep on painting. We should keep on. We should keep open the window of the mind so that we should not get lost. আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে, আমাদেরকে জীবনটাকে খুঁজে পেতে হবে. There are lots of things, lots of hope. So আশায় আশায় ভালোবাসায়, the love and peace, and also lots of hope. That's it, Arvind. Thank you. Over to you. Thank you so much, Mithun. And on behalf of everyone here, we like to thank you. उम्मीद करता हूँ कि we can have 1 week of a special session with you with only music and how music helps shape our Very mindsets important. as well. True. I'll be very happy to come on again. So definitely I want to join with you once again. So wish you all the best for your venture. Thanks a lot. I have some appointment today, so that I need to leave. But definitely, just for such initiative, it's my commitment. I will come back again, Arvind. I will come back again, Manoj da. Vivek ji, all the best. We'll definitely meet. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much, Mithun. हम लोग यही चाह रहे थे कि थोड़ा म्यूजिक के साथ शुरुआत करें so that we can have a little music just to brighten up your mood. And now coming to why we are all here. Ladies and gentlemen, let me quickly introduce my guest today. His name is Mr. Vivek Sharma. इनका अपना एक beautiful podcast है Spotify में, and he's also an author. He is also a social entrepreneur. Now, when people talk about mental health, when people tell you to be very positive, जब लोग आपसे कहते हैं कि उम्मीद रखो, confidence रखो, everything will be all right, don't you question that person? How dare you say this? How dare you? एक गुस्सा आता है. Let's be very honest. We feel angry when someone tells us something really nice. हमको लगता है कि वो दूसरा इंसान ज्ञान दे रहा है. और हमको ये लगता है, boss, my mother is suffering from cancer. I had a divorce. I don't have a job. I don't have money. I am the one who's diagnosed with cancer. So many problems I have. And here you are telling me to be very positive. Let's face it. That is the first reaction that all of us have. But as Manas rightfully said, and I want him to be a part of this panel also, Ajke, so that we can continue this conversation. What if I tell you that we can find meaning in our suffering? We can find meaning in our loss. And that is something that we can use for the greater good. आज के मेरे गेस्ट विवेक शर्मा जी बॉम्बे से ही हैं और सपनों के शहर में समटाइम्स सपने पूरे नहीं होते. Vivek, welcome to this lovely session. You're more like a friend and a brother to me. I love the positive outlook with which आपके podcast में you have helped reach more than 500 people and stop them from committing suicide. Manosda would safely agree if I say this. The next pandemic is depression. The next pandemic right now in the world is not COVID-19. It's not Omicron. कोई भी variant नहीं है. It is mental health which needs to be addressed and spoken about. तो विवेक जी अपने बारे में जरा कुछ बताइए लोगों को जो आपको देख रहे हैं. Your story. People talk about the positive parts of it, but I like you to start how we often converse on how the negative things shape our personality a lot better than the positive things. Thank you so much, Arvind and Manasda. It's indeed a pleasure and privilege to be amongst you. And जो लोग मुझे कलकत्ता से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरा बहुत क्लोज एसोसिएशन है कोलकाता से, because I come from Indian Institute of Management, Kolkata, Calcutta, as we say it, from Zoka. तो I'm a proud joker. And जब बात करते हैं, जैसे अभी अनुपम दा ने बताया कि पेंट द पिक्चर, लेकिन दोस्तों ऐसा समय आता है जिंदगी में जब हम like I give the example of my wife, she's a painter and she paints very beautiful. But एक समय आया हमारी जिंदगी में जब वो ब्रश उठाते थे तो ऐसा लगता था कि क्या पेंट करें. Everything is dark. कुछ समझ में नहीं आता, कुछ दिखता नहीं, कुछ सूझता नहीं है.
और जैसा अरविंद ने बताया कि कहना बहुत आसान होता है, इट्स वेरी ईज़ी। लोग आते हैं, बोलते हैं जब आप तकलीफ में होते हैं, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, भगवान जो करता है सही के लिए करता है। भगवान से देयर इज़ अनदर लिंकेज टू दिस डिस्कशन आई विल शेयर गोइंग फॉरवर्ड। और अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँ तो बेसिकली आई एम अ मैनेजमेंट ग्रेजुएट, मार्केटिंग मेरा पैशन है एंड आई हैड बीन इन कॉर्पोरेट फॉर क्लोज टू 11 इयर्स and then I quit, of course, for the obvious reason, the corporate job, and I started an agency. And then as if I say myself a social entrepreneur, it's because a lot of work, और शायद मेरी जिंदगी का जो पर्पस है, that is about transforming others life. क्योंकि ओके देन बिफोर आई जंप टू द टॉपिक फॉर टुडे, मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। आई एम श्योर हम सब जो है कहानियों से बड़ा सीखते हैं, चाहे वो हमारी माइथोलॉजी हो या कुछ भी हो, या हमारी नानी दादी की कहानियाँ हो, कहानियों से हम बहुत कुछ सीखते हैं। एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक लड़का था, एक स्मॉल टाउन में रहा करता था, और उसे हमेशा लगता था कि यार मुझे कुछ बड़ा आदमी बनना है। एंड एक बार उसके टीचर ने पूछा कि भाई क्या बनना चाहते हो? तो उसने बोला कि मुझे ना पायलट बनना है, मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना है एंड मुझे जेट उड़ाना है। तो ही वाज़ एप्रिशिएटेड बिकॉज़ ये शायद बहुत कम लोगों का एस्पिरेशन होता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ ट्रेन किया जाता है कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीए बनना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गोइंग फॉरवर्ड लाइफ में कुछ उसके ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए कि ही वाज़ थ्रोन ऑफ द एकेडमी बिकॉज़ ऑफ सम मेडिकल ग्राउंड्स। उसका दिल टूटा, बहुत तकलीफ में आया वो। उसको लगा कि यार ज़िंदगी खत्म हो गई, लेकिन ज़िंदगी तो ज़िंदगी है दोस्त, चलती रहती है, आप चाहो चाहे नहीं चाहो। सो उसकी भी ज़िंदगी चली, और उसके बाद ग्रेजुअली ही डिड गुड इन हिज़ लाइफ। फिर उसके बाद उसने कॉर्पोरेट जॉइन किया, उसे एक लड़की से प्यार हुआ, एंड वो उसका जो प्यार था उसकी पत्नी बनी, और काफ़ी साल लाइक दे आर स्टिल टुगेदर। In between, he had a dream to achieve something big in his life. Of course, जैसा हम सब जब हम अपने 20s में होते हैं, बड़े सपने देखते हैं, और सपने साकार करने भी चाहिए, बहुत मेहनत करनी चाहिए उस पे। एंड इसने भी बड़ी मेहनत करी, और उसके बाद फिर ये आ गया सपनों के शहर में, जिसको हम बोलते हैं मुंबई। मुंबई में आया एक स्मॉल टाउन बॉय, गोइंग टू द इंस्टीट्यूट लाइक IIM कैलकाटा ऑन हिज ओन। ऑफ कोर्स सेल्फ मेड तो कोई नहीं होता है, लोग बहुत सारे पीछे होते हैं, बट बाय एंड लार्ज ही फॉट हिज लाइफ। एंड एक छोटे शहर से आने के बाद एक बड़े शहर में, स्पेशली मुंबई जैसे घर में शहर में अपना एक घर होना itself is a dream for lot many people. So this guy has materialized one of his dream. He had his beautiful wife with him. He had a son that was very adorable, and his जो बोलते हैं मटेरियलिस्टिक चीजें, कार, ये वो, घर गृहस्थी एंड एवरीथिंग, दिस गाय वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एंड उसको ऐसा लगता था कि जिंदगी में जितना उसने मेहनत किया है उतना वो सारी चीजें उसको मिली है, एंड वो हस्बैंड वाइफ जो है अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। एंड हर पल वो थैंक बोला करते थे गॉड को कि थैंक यू गॉड फॉर ब्लेसिंग अस विद एवरीथिंग दैट वी नीड। एंड बहुत सारे सपने थे, आंखों में चमक थी, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उनकी जो आंखों की चमक थी वो खो गई। वन डे दिस कपल दे लॉस्ट देयर ओनली चाइल्ड without any reason. Like this guy went to drop his son in the school in the morning, and by evening this child was no more. वो दोपहर में अपनी माँ के साथ में खेला, और he ate lunch and everything, and शाम को he was no more. So this kind of tragedy, I would say, बिल्कुल हिला के रख दिया, किसी के लिए भी शायद हिला के रख देने वाली चीज है। एंड इवेंचुअली जिस लड़के को ऐसा लगता था कि यार मैं यहाँ पे बंगला बनाऊंगा, ये गाड़ी खरीदूंगा, वो सब चीजें खरीदूंगा, आफ्टर क्रिमेटिंग हिज ओनली चाइल्ड विद हिज ओन हैंड्स, ही केम होम एंड फेल्ट लाइक आग लगा दो इन सारी चीजों को, कुछ मतलब नहीं है इसका, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों जिंदा हूँ। एंड दे बोथ स्लिप्ड इनटू डिप्रेशन। एंड डिप्रेशन के बाद में बहुत सारी चीजें हुई, उसके बाद फिर दे इवन अटेम्प्टेड सुसाइड। लेकिन जब ये एक फेल्ड अटेम्प्ट उन्होंने सुसाइड का किया, उसके बाद जब उनको समझ आई और ज़िंदगी की थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं समझ में आई, तो उन्होंने दे स्टार्टेड गिविंग बैक टू सोसाइटी। एंड टुडे दे आर डूइंग गुड, नॉट ओनली फॉर देमसेल्व्स एंड बट टू द सोसाइटी एज वेल। वो लड़का मैं हूँ, और वो जो लड़की है वो मेरी पत्नी है श्वेता। एंड दिस इज़ हाउ आवर स्टोरी फ्लू। जब मैंने आपको बीच में बोला था कि वो गॉड वाली बात, जो ऐसा जब जिंदगी में कैसा होता दोस्त,
जब हमारी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होता है तो वी ऑलवेज टेंड टू ब्लेम समबडी और समथिंग, यू नो। आज ट्रैफिक है इसके लिए मैं ऑफिस लेट आया, आज पानी नहीं आया इसके लिए मैं नहा नहीं पाया, वट एवर वी ऑलवेज हैव समथिंग और समबडी टू ब्लेम विद। लेकिन तब हम क्या करेंगे जब लाइफ में ऐसा कुछ अप्रिय हो जाए या ऐसा अनप्लान्ड हो जाए, लाइक किसी को कैंसर होना, तब हम क्या करते हैं, फिंगर अप करते हैं, भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वाई डिड यू डू इट टू मी। देन वी कम टू द स्टेटमेंट दैट गॉड इज नॉट फेयर। बट जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं और एक समय के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि हमारी लाइफ में जो चीज़ें हुई वो इस पर्पस के लिए थी, इस मकसद के लिए थी। सो वो जो स्टेटमेंट होता है गॉड इज नॉट फेयर, वो क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट हो जाता है। इज गॉड नॉट फेयर, गॉड इज नॉट फेयर, क्वेश्चन मार्क। सो यही वो मुहिम है जिसके जरिए जैसा अरविंद आपको बता रहे थे कि मेरा जो पॉडकास्ट है, ये पॉडकास्ट करीब करीब 12 लाख कानों तक जाता है, 1.2 मिलियन लोगों तक जाता है। और अभी तक आई हैड बीन एबल टू humbly support, guide, whatever you say, 550 is precisely is the number that has been helped by me, and of course with the team that I have now. हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई ज्ञान देना जो है बड़ा आसान है, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। हो जाता है ठीक, नो डाउट, सब ठीक हो जाता है। देखिए, या तो हम जीना सीख जाते हैं या तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि यार सक्सेस का ये मंत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है। भाई केमिस्ट्री में बाकी सारी चीज़ों पे फॉर्मूले लगते हैं ना, हमारी ज़िंदगी में क्या उसका कोई फॉर्मूला है? एक्चुअली अगर देखा है तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा वो है। आई टेल यू अनदर इंसिडेंस, इट्स वेरी पेनफुल to me to even recall that, though I have mentioned it in my book, but it's very painful. Lekin the truth is that this is how it happens. When I came to know that my son is no more, and मुझे I practically I didn't have courage. मुझे आज भी समझ में नहीं आता, या जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं या हम लोग जो भी देख रहे हैं, सब अगर अपनी लाइफ में उन प्रॉब्लम से रिलेट करके देखेंगे ना, तो हमको कभी ना कभी ऐसा लगता था कि यार ये तो हमसे ना हो पाएगा, ये हम कैसे करेंगे, बट ये होता है। So when I was told by the team of the doctors that Amog, my son is no more, I came home, and the moment I broke this news with my wife, she denied. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो, अमोग कहाँ है, जाओ और अमोग को लेकर आओ, इट कैन नॉट हैपन। देन एज आई एंटर द होम, वो एक माँ तो माँ है और हर सारी चीज़ें वो करती है अपने बच्चे के लिए। तो उन्होंने जो है एक दिया जलाकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो। एंड जैसे ही मैं अंदर आया, द फर्स्ट थिंग, द रिएक्शन आई वुड से, सी थ्रू दैट दिया, वो जो भगवान की जो मूर्ति थी उसको उठा के फेंक दिया उन्होंने। एंड थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़ा शांत हुई, देन सी स्टार्टेड काइंड ऑफ नेगोशिएटिंग विद गॉड कि आप अगर ऐसा झूठ होता है तो आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। Then subsequently we went into depression that went on for a long time, 6 years, and then finally we accepted कि भाई अब जिंदगी में यार आगे बढ़ना पड़ेगा, we don't have a choice. So इस प्रोसेस को ना, ये एक प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, इट्स नॉट विवेक शर्मा की इजाद नहीं है ये, बट आई रिप्रेजेंट इट एज डंडा। आज दोस्तों, अगर आप इस सेशन से, इस वीडियो से, इस इंटरेक्शन से कुछ अगर अपने साथ लेकर जाना चाहते तो प्लीज ये डंडा लेकर जाइए। ये वो डंडा नहीं है जो हमारे टीचर्स या हमारे पेरेंट्स हमको मारते थे, ये वो डंडा है जो नेचर हमें देता है और हमें इसको पॉजिटिवली लेना होता है। सो द प्रोसेस इज लाइक द फर्स्ट थिंग। देखिए, जिंदगी में जब भी कुछ ऐसा होता है तो हमारी, जब हम चेंज की बात करते हैं, बड़े चेंज की बात करते हैं, जैसे आप कहीं गिर गए या उठना है, या लाइफ में कुछ फेलियर हो गया, बहुत बड़ा फेलियर हो गया, किसी की डेथ हो गई, या किसी को कैंसर हो गया, कोई ऐसी बीमारी हो गई जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, जिस दिन, जिस वक्त हम सोचते हैं ना कि आई नीड टू चेंज, सबसे पहली लड़ाई होती है हमारी खुद से। बहुत बड़ी लड़ाई होती है, बहुत लड़ना पड़ता है, बहुत ताकत चाहिए होती है उसके लिए। सो पहला जो इमोशन आता है दैट इज डिनायल। नहीं, मैं कैसे, मैंने तो कभी स्मोक भी नहीं किया, मैंने तो कभी शराब भी नहीं पी, मैंने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया, मुझे कैसे ये हो सकता है, मैंने ऐसे क्या कर्म किए थे। डिनायल, इट्स ऑलवेज अ पार्ट ऑफ दैट। देन कम्स एंगर कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, भगवान तूने मेरे साथ, तू है कि नहीं है, होता है ना।
Then comes negotiation. Then we start negotiating with anything or everything around us. यार अगर मैं अगर मान लीजिए कि कोई फेल हो जाता है एग्जाम में, तो क्या बोलता है कि यार अगर ये न्यूज़ झूठी रही तो मैं 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, काइंड ऑफ होता है ना. Then comes depression. Now this is something that is killing. It takes a lot. Then comes acceptance. So denial, anger, negotiation, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, ये प्रोसेस है, ये सभी के साथ होता है. कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है. आप खुद ही रिलेट करके देखेंगे अपनी लाइफ में. कभी छोटी अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है, मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ के लिए कॉन्टेस्ट करा और वो चीज़ आपको नहीं मिली, तो आप शायद थोड़ा आसानी से निकल पाएंगे. लेकिन जितना ज़्यादा गहरा प्रभाव होता है, जितनी बड़ी चोट होती है, उतना ही मुश्किल होता है उससे निकलना. लेकिन निकलना ज़रूरी होता है. ये प्रोसेस याद रखिए एंड कोशिश कीजिए कि वो जो डिनायल से जो एक्सेप्टेंस का जो जर्नी है ना, वो जितनी जल्दी हम पूरा कर सकें उतना अच्छा है. एंड I would suggest or I would submit to this that you are not alone. कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमारी ही ज़िंदगी जो है ऐसी खराब हुई पड़ी हुई है. लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, बात करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो लगता है कि यार बहुत लोग हैं, हमारे जैसे बहुत लोग हैं. Believe me, one thing that I did, I'm really grateful to that friend of mine. She could sense that Vivek, you're not keeping well, you need to do something. You are trying to take care of Shweta the best possible way you can, but you need to take care of yourself first so that you can help her, you can empower her. एंड सी सजेस्टेड मी टू राइट अ जर्नल. और वो जर्नल लिखने की जो प्रक्रिया थी, वो शुरू होकर एक बहुत बड़ी मुहिम में कन्वर्ट हो गई. दैट इज अबाउट प्रिवेंटिंग डिप्रेशन एंड सुसाइड अमंग्स यूथ. सो उसी जर्नल राइटिंग के बाद जो है, देन आई रोट दिस बुक. एंड उस दौरान जो 2 साल का जो मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा कितना बड़ा टैबू है ये मेंटल हेल्थ हमारे समाज में. आप यकीन नहीं करेंगे कि 52 लोगों को मैंने इंटरव्यू किया था फॉर दी पीरियड ऑफ 2 years बिफोर दिस बुक गॉट पब्लिश्ड. एंड उसमें 6 कहानियां पब्लिश हुई हैं. एंड अमंगस्ट 52, 40 लोगों ने ये बोला कि विवेक, इट हैड बीन वंडरफुल मीटिंग यू, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग, ब्ला ब्ला ब्ला, बट प्लीज डू नॉट पब्लिश माय स्टोरी. आई डोंट वांट द वर्ल्ड टू नो दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज इन डिप्रेशन और आई अटेम्प्टेड सुसाइड. इतना बड़ा टैबू है ये, इतना बड़ा टैबू है. और टैबू सिर्फ और सिर्फ अगर उसकी बॉर्डर लाइन या बॉटम लाइन अगर हम देखेंगे, तो सिर्फ एक ही रीजन है, हम बात नहीं करते हैं. आज कई मामलों में कई जगह पे कैंसर स्टिल थोड़ा एक्सेप्टेड है. भाई, जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं ना, तो हम बताते हैं लोगों को, यार मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है, अस्पताल लेकर जा रहे हैं, उसको दिखाना है. लेकिन जब हम अंदर खराब होते हैं ना, तो हम किसी से बात भी नहीं करना चाहते हैं. इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है. अगर हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करना है, तो हमें बात करनी होगी. और बात सिर्फ लोगों से नहीं, अपने आप से भी बात करनी होगी. हम अपनी नहीं सुनते हैं, हम चुपचाप आइसोलेशन में चले जाते हैं. लाइक टू गिव यू माय ओन एग्जांपल, ऑलमोस्ट ईयर एंड अ हाफ, आई, जो लोग मुंबई को जानते हैं थोड़ा बहुत, आई लिव इन मीरा रोड. एंड मेरा ऑफिस जो था उस टाइम पे नारीमन पॉइंट में था. Almost a year, I drove in car. It is a punishment actually, if you ask me, or any Mumbaikar if you ask. Only because I could cry, because मैं घर पे नहीं रो सकता था. I had to be like a strong person. I had to be showing my stronger side as it is expected from men. I was not supposed to cry. So that was the only respite that I used to get. And वो टाइम पे मैं उसको यूटिलाइज करता था अपने आप से बात करने के लिए. सो मुझे लगता है कि अगर मैं बाउंस बैक कर सकता हूँ और लोग बाउंस बैक कर सकते हैं, तो सभी लोग कर सकते हैं. इट इज़ जस्ट अ नेचुरल ह्यूमन फिनोमेना. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. बात सिर्फ इतनी सी है कि सुनिए अपनी और बात कीजिए. दैट्स इट. Easier said than done, Vivek bhai, easier said than done. We all have our own share of problems. किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास फैमिली का सपोर्ट नहीं है. We sometimes don't have people we have to talk to, and we all have difficult situations in our life. I mean, who better than Manusda? Manusda, if I can include you in this conversation, as you said, these are things that we talk about which are not part of the syllabus. When you are sitting and telling a patient, that their mother is diagnosed with cancer or they are diagnosed with cancer, that initial moment is a bit of a denial. And I'm sure you can read the same reaction which Vivek said.
Jay, why has God given me this punishment? Why am I suffering from cancer? I never smoked, I never drank, I never did this, I never did that. It's almost like हर दिन ना हम एक commercial transaction enter कर रहे हैं God के साथ. I do this so that this doesn't happen to me. I will do this so that this should happen to me. But that's not the way life works, right? We don't have an idea about the larger picture. Vivek, I'm immensely grateful because there are not many people I know, and I'm sure Manasa would agree, who can come out and openly talk about their darkest fears and secrets that they hold deep in their souls. The loss of a son, I don't think so even God can come and replace that, to be very honest. But my mind goes back to that one line that you said, I cannot cry in the house, and that's why I would cry in the car. And then I would go back home, trying to be strong. Kisne kaha ki, men cannot cry? I mean, do you realize that when we open up to people and we talk to them, chahe wo gussa ho, chahe wo, love ho, or whatever emotion that you have, our body is designed like a pressure cooker. The more you keep it inside, the more it bottles up. So we need to let that, whistle out. Just talk to someone. And that's the reason why we are doing these sessions. Taki, these 35-40 minutes, it gives you some food for thought as well. Manasa, would you like to, share anything in your experiences in your regard? Yeah, I mean, the program so far has been absolutely amazing. And it has been really touching. And I'm sure that this program will help a lot of people around us. And thank you, Vivek ji and Arvind, for chipping in for valuable life skills. Whatever I learned from my little experience in life with the patients, day to day life, is basically that it is very important to lend a good ear of listener. And if a patient can talk to someone, that can sometimes take them way ahead in their journey. We all know whatever is the treatment, whether there is treatment or not, sometimes there are no options even then. But the option of speaking or talking, that does not go away. And one, we must not forget the essence of sharing each other. And being lonely is something, uh, it's crucial if we think our journey of whatever we say, the human civilization and stuff. There is a particular reason why we feel lonely. We feel lonely, it has been very well researched by psychologists and everything. We feel lonely to take a pause in life, and so that we can literally turn our head to our near and dear ones and try to bond them together. And it may be a relation between two friends, it can be a relation between a colleague, it can be a relation between someone unknown who has been unknown for so many years. But if someone talks by the person who is by the side, like whenever my patients tell me, the doctor, when I was waiting to see you, I had this person sitting by me, I've never met that person, but I think I could talk my heart out. And that person perhaps will not meet my patient again ever in our life. But opening up and you know decanting our emotion, that is very important. We have to have some shoulder to cry on. And it is very, very one of the most important things in life, that we need to find solace in some friends or family or whoever. And some, because we need to ask for help. If I'm not happy, or if I'm lonely, if I'm a little bit down and out, then we do not want to meet other people. That is a mental block. We need to take it over and done with. Because if we feel lonely, our mind will keep us lonely. But we have to teach our mind that, listen, mind, I'm here to embrace my life, and I'm going to befriend with some other people. How? This may be difficult. This may be the most challenging part of someone's friendship or something, but this is something, talking, sharing, and everything. And I urge you, whoever is seeing the video today or during the rebroadcast or wherever, talk to someone.
Even if you have got a 5 seconds of minute, just talk. If you see any person in front of the, when you are doing morning walk, give a big smile and say hello. You don't have to suffer in cancer. You don't have to suffer with any deadly disease. You don't have to lose any near and dear ones. Smile is something which is still free. So whenever you are doing morning walk or evening walk, seeing something, people may say, "Oh, he's a jerk. He's something. He's mad." But let them tell that. One day, that person will come and tell that, yes, because of your smile, it made my day. So that is something, and we'll let Arvind and Vivek, do more. I completely agree with you, Manashta. I'll read out a comment which says, I think Sumita is commenting, suicide attempts is the biggest negativity. जितने लोग आप मुझे देख रहे हैं, if my language reaches out to your heart and not your ears, then I request you. We have a gentleman here on the panel who saves people every day. With the help of medicine, with the help of surgery, with the help of his team. We have one person who saves people with his counseling. So every minute we are trying to save people. Have a little gratitude for what you have. Suicide I just is never wanted to the answer. mention one thing. I'm really sorry to cut it in a very unparliamentary way. And we have got another person who saves and makes life joyful to many people by making people listen to his music and the music he plays. And music is another thing. We must have a program one day. I hope that we will, Manusha. But the point I'm trying to make is we live in a very interconnected world. और ये जो interconnected world है, if there is suffering in your life, and I don't know what your degree of suffering is, you could be diagnosed with cancer, you may have no money right now कि आप अपना सपनों का घर बना सकें, you may have been cheated by your business partner, you may have had a weak heart, I don't know the amount of problems that adds up. But sadly, we are living in a world where we have 5,000 people on our Facebook, but not one person to talk to pick up the phone at 2 o'clock in the night, जिसको हम phone करके कह सकते हैं that we can talk. My request to parents watching this, keep a good watch on your kids because they look up to you. अगर आप और आपके wife converse नहीं करेंगे घर में, सारा दिन मोबाइल फोन पे रहेंगे, the kids don't learn the art of conversations and they learn from parents. Start having these little important conversations in your house as well. I'd like to ask both of you a very important question. And Vivek bhai, I'd like you to go first on this one. You may choose to skip it. As I said, nothing about this conversation is planned. Aapne kaha that when you lost your son, there was a phase jab Shweta ji threw Bhagwan ka jo statue hai wo ghar pe. Do you now believe in God? And Manasa, I will ask the same question to you after Vivek ji finishes. Do you believe that sometimes being spiritual is the best form of counseling? And when I say spiritual, I keep repeating it is not about going to temples or mosque or churches to pray. हम जो प्रेयर जानते हैं वो ट्रांजैक्शन है कि भगवान मैं तुम्हें नारियल चढ़ा रहा हूं, मुझे 90% दिला दो, मेरे बेटे को नौकरी मिलनी चाहिए, मुझे गाड़ी मिलनी चाहिए. That is a commercial transaction. That is not prayer. True prayer is I am your child and whatever has to happen to me has to happen with your will and I surrender. That is what Vivek in his own way said acceptance. Manojda in his own way said about acceptance. So I'd like to ask both of you, let me rephrase the question. To bounce back, in short, what are the little qualities that we need to do? Vivek, kya hai wo formula to bounce back in life from a suffering? So I would completely echo with what Arvind is saying. Like spirituality is something, I had always been spiritual. I was not religious. I was an atheist, but I always had been spiritual and I am still. And जहाँ तक अगर हम बात करते हैं God की, तो yes, there is something that moves us around. There is some power. We call it nature, we call it God, or we call it anything. It is there and it does help. This is one of the I would say finest path to the recovery. And अगर हम फॉर्मूला की बात करते हैं कि क्या वो चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें जो हमको करनी चाहिए. देखिए, ज़िंदगी को जीने के लिए सबसे ज़रूरी अगर कोई चीज़ है, शायद हवा, पानी, जो कुछ भी है, ऑक्सीजन वगैरह, उसके बिना हम थोड़ी देर रह सकते हैं. लेकिन अगर हमें समझ नहीं है ना, सी समथिंग हैपेंड दैट डे, व्हेन वी वर सेव्ड एज अ ह्यूमन. सो समझ जो है वो बहुत ज़रूरी है. और समझ के लिए हमको ये समझना ज़रूरी है कि भाई जब कभी हम ऐसी परिस्थितियों में जाते हैं तो हमको कहाँ रुकना है और कहाँ हमको चलना है. सो
टॉक टू योरसेल्फ, एंड ये जो समझ आती है, जो कन्वर्सेशन होता है, जैसे अगर हम चाहें तो गीता का एग्जांपल उठाते हैं या कोई भी एग्जांपल उठाते हैं हम, इट्स लाइफ इज ऑल अबाउट, और द नॉलेज इज ऑल अबाउट कन्वर्सेशन, बी इट विद योरसेल्फ और समबडी विद समबडी एल्स. एंड जैसा कि अरविंद बताते हैं कि अगर आपको कोई नहीं मिलता है तो आप भगवान से भी बातें कर सकते हो, लाइक यू कैन हैव दैट फेथ इन द यूनिवर्स और द नेचर. ये आई थिंक बहुत बहुत जरूरी और बेसिक चीज है. Absolutely. Absolutely. I completely echo Vivek ji's thoughts, and whatever he said and Arvind said, all about spirituality and everything. Spirituality is an integral part. Sometimes we confuse spirituality with religion. It's far beyond. And I think spirituality is something which marries a body with mind, and where the physical ability ends and mind starts to crumble, and when the strength of mind ends, the body starts to crumble. And here, at that juncture, just as the sea touches the ground, we have the spirituality, and we have to take solace in that. Spirituality means different things to different people, but what is important to understand, that when in problem, ask for help to the right person. That is something crucial to understand. Another thing I wanted to mention, that we often say that, that person coped up with this problem because he had those supports, or she had those support. I do not have those supports, so how do I cope with that? So it's about the feeling of futility, that I am the most disadvantaged people. And nowadays, with the social media and everything, we see all the glitters and all the vamps of life, that someone is going for picnic, and we usually scheme the better parts of life in social media. And nowadays, the social media dominates our day-to-day life. But with seeing those so many happy hours and everything, we feel that perhaps everyone is happy. Everyone is not happy. It's not about all the glitters. We cannot forget the famous thing that Bhagavan Buddha said, that go and find mutti bhar ke rice leke aao, or whichever language he said. I am not very good. From a house where no one has experienced death. Exactly. Or from a house where no one has experienced unhappiness. So life is not about being happy all the time. Life is about accepting the down and out points. Life is about going to the great teachers. Reading, I think, is very important. And because when we read book, we imbibe a lot of good things of decades of experience into us, and find out the time. Bangla ekta kotha ache, I'll just mention a little thing in Bengali, that agekar dine, when Bengalis mostly, even though Rabindranath has been translated in all languages, Bengalis had problems in their life. They turned to Rabindranath Tagore, okay, because he was a great observer. So all the solutions are written in his books, I have been told. But so these are the few things I think is very important. But first of all, the crux of it is to acknowledge that I need help. I think that is very हरिवंश राय बच्चन की ना एक बहुत प्यारी लाइन मुझे याद आती है. He's such a brilliant poet, and I always found my strength in good words, in lyrical poems or songs. अंधेरे में दिया जलाने से तुमको किसने रोका है? If there is darkness all around, at least make an effort to put that light out in the dark, and that's what we are trying to do here. किसने तुमको रोका है? तुम ही ने तुमको रोका है. तुमको किसने रोका नहीं है, तुम ही ने तुमको रोका है. You are only stopping yourself. I like to have one story as we end the session today. We always planned 40 to 45 minutes. It's an inspirational story जो मैंने आज पढ़ी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी. Feel free to please share this video also. In this Winter Olympics, there was a player. He was from Austria. Both Manojda and Vivek, I was reading this in the paper today. Skiing करता था वो, और 2017 में he met with a very bad accident. And that accident took away, in medical language, his spine, his skull was damaged. He was in complete crutches.
the very fact that he could walk, it's a miracle. Doctors had told him कि आप चल नहीं पाओगे, आप भूल ही जाओ. He was standing at the podium today with his gold medal 5 years down the lane. He was standing at the podium today winning his gold medal, and that gave me goosebumps when I saw the story. And I said हमें गोल्ड मेडल जीतना है अपनी जिंदगी में, लेकिन हमारा गोल्ड मेडल किसी ओलंपिक के गेम में नहीं है. Our gold medal, just as Vivek bhai said, is to accept life as it comes and take every challenge head on. If we had a very normal life ना, जहां पर कोई suffering नहीं होता, जहां पर पैसे होते, you would have had everything. Probably you would have found very little meaning. And you may not like or agree to what I'm saying, but I say this from the heart as someone who has experienced it, and please feel the honesty. If you don't face suffering, I think you don't understand life. To understand life, it cannot be just the roses, but you also have to experience the thorns. And with that emotional note, I like to end the conversation today. Thank you so much, Vivek bhai, for joining us. Thank you so much, Manasda, for spearheading this initiative. I think I have a new name for this series. This is the second episode. Is series ka naam, we should keep it out of syllabus. It's a brilliant name that you've just managed to utter. You should keep this heading out of syllabus. And Vivek da, thank you so much for taking your time. I know you have a busy schedule. Podcast hai aapka. It's been great. I know we can go on and on, about conversations. But anything that both of you would like to add before we end up? Manasda, starting with you. My thanks to Arvind and Vivek ji, and of course Mithun ji, for joining this program and making this program a big success. And this is a program I want to use it as a book. Even in my own life, if I'm down and out, I will come to this program and start to learn new skills in life. I will not stretch it further. I will hand it over to Vivek ji for last few words. And thank you very much for joining for this completely unsponsored video, because you all who have come and joined is from bottom of your heart. There is no financial gains from this program. Thank you very much. Over to you, Vivek ji. Thank you so much, Dr. Saab. If I have a minute, I would like to read a poem that I have written. Do I have a minute, Arvind? Of course. You have 2 minutes. We have 5 minutes. You have the entire show. Thank you so much. Thank you so much. So it says like, it narrates the story, a journey. उस दिन जब टीचर ने कहा था कि ये सम ब्लैक बोर्ड पर सॉल्व करेगा कोई, उस दिन जब टीचर ने कहा था कि क्या ये सम कोई ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करेगा, पैर कपकपाने लगे थे और होठ सूखने लगे थे, लेकिन हाथ उठाकर आवाज लगाई, हाँ मैं करेगा. सरकारी नौकरी वाले खानदान में एक फरमान आया कि तू सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेगा. मना किया तो सवाल उठे, बातें सुनी, पूछा गया कि अपना गुजारा कैसे करेगा. अंदर से फिर एक आवाज आई, हाँ मैं कर लेगा, हाँ मैं कर लेगा. कड़ी मेहनत, सफलता और सपनों का साथ थामे चलेगा. कड़ी मेहनत, सफलता और सपनों का साथ थामे चलेगा. टाइम पे सेटल भी होगा और कामयाबी भी हासिल करेगा. आत्मविश्वास भी डगमगाएगा, लेकिन इस बार फिर बोला, हाँ मैं करेगा. जिंदगी में एक ऐसा स्टेज आया जब सपने टूटे, जिंदगी भी छूटी. सपने टूटे, जिंदगी भी छूटी, गिरा भी, चोट भी लगी. फिर उसकी तरफ देखा, उम्मीद जगाई और बोला, तेरे लिए अगर सब खत्म तो भी क्या, तेरे लिए अगर सब खत्म तो भी क्या, अब दूसरों के लिए कुछ मैं करेगा. एक बार फिर अंदर से आवाज आई, हाँ मैं करेगा. With this note, I would like to submit that अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है, तो प्लीज दूसरों के लिए कुछ करिए. You are needed here. Thank you. Manas, I was speechless. Such a beautiful poem. Very simple but very difficult to understand. एक सूफी गाने के 2 लाइंस हैं कि रूह की अर्जी दीजिए और ऊपर वाले से कहिए जो तुम्हारी मर्जी कर लो. अपनी रूह की अर्जी दे दो, लेकिन दिल से देना उस अर्जी को, बिना कोई बार्गेन किए, बिना कोई नेगोशिएट किए. और इस कविता को अगर मैं एंड कर पाऊं आज के इस कन्वर्सेशन पे, अगर आपकी आज्ञा हो विवेक भाई, तो ये है कि मन के अंधेरे में
कभी तुम्हें ये लगे कि जिंदगी का साथ छोड़ दो, कि मन के अंधेरे में कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी का साथ छोड़ दो, कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई अपना नहीं जिसके साथ तुम बात कर सको, कभी तुम्हें ये लगे कि तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं, तुम क्यों पैदा हुए, क्या अंदाजा है तुम्हें, क्या करना है तुम्हें, क्या करना चाहिए, तो मन के अंदर से एक आवाज निकलो कि मैं करेगा, मैं जिंदगी जिएगा, और इस सवाल का जवाब खोज के आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मनोज, And थैंक यू before सो we मच। say Thank- goodbye, I would like to tell all the listeners and viewers that अगर आपको कभी लगे कि आप अकेले हैं तो आप मुझसे बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, विवेक शर्मा सोशल एंटरप्रेन्योर टाइप करना है आपको गूगल सर्च में, और मुझ तक पहुंचने के बहुत सारे माध्यम मिल जाएंगे। और मेरा जो पॉडकास्ट है, हर हफ्ते एक एपिसोड आता है जो कि मेंटल हेल्थ को एड्रेस करता है, बाय एड्रेसिंग दैट जो हमारे लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं उन सारे चैलेंजेस को एड्रेस करता है। 3 साल से ये शो चल रहा है एंड बहुत मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी क्लैरिटी ला सकूँ उन सारे टॉपिक्स पे। आपको सिर्फ स्पॉटिफाई पे गॉड इज नॉट फेयर क्वेश्चन मार्क वो सर्च करना है। Thank you so much. I think today Manojda, we also got the answer to why his podcast is titled "God is not fair?" question mark. It had something to do with that incident when he was talking about Shweta ji. God is not fair question mark. I always thought कि इतना अजीब नाम क्यों रखा पॉडकास्ट में, आज इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया। Thank you. Absolutely. Thank you. And for those who are listening and will be listening, will be in the comment box, we'll be writing Vivek ji's Spotify link so that we can listen to. And I personally want to listen to that. Thank you very much, everyone. Thank you so much. Thank you so much.